हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। ओसीएस बाय रंजन यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्ची। आज आम 2021 सीपीईटी बॉटनी क्वेश्चन को डिस्कसन करवा। ठीक अच्छे, तो जदि टेस्ट सीरीज नापी चाहते तो आमर यूनिवर्सिटी लेवल प्रिपरेशन चलती। जदि टेस्ट सीरीज ने ताले हमको कांटेक्ट करें। नंबर टी हूँ 7978405181। ठीक अच्छे, तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में अच्छी, आप चाहिए कांटेक्ट करें हमको। ठीक अच्छे, तो देखिए फास्ट क्वेश्चन। द alga with multinucleated and siphonous vegetative thallus is dash। आ भितर किए जहाँ पाखर कि मल्टीन्यूक्लिएटेड आउ सिफोनस वेजिटेटिव थालस थाए प्रेजेंट थाए। ऑप्शन देइछि इडोगोनियम, भाउचेरिया, फ्यूकस, पॉलीसिफोनिया। आ भितर कहा पाखरे ये कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी। तो आर आंसर कोड हम ना ऑप्शन नंबर बी भाउचेरिया। ठीक अच्छे, when the DNA of a phage is transmitted to the host, there is a temporary period of disappearance of infectivity. Such period is called dash। से period को कौन कहा जाए? क्वेश्चन कौन कहूँ ना, when the DNA of a phage is transmitted to the host, DNA phage जो ट्रांसमिट हम क्या पाखक ना होस्ट पाखक, देयर इज ए टेम्पोरारी पीरियड ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ इनफेक्टिविटी। इन्फेक्शनटा से डिसअपियरेंस हम किसी समय से पीरियड को कौन कह जाए? से पीरियड को कौन कह जाए? एक्लिप्स पीरियड। मन रखिए ताकू एक्लिप्स पीरियड कह जाए। ऑप्शन नंबर ए हूँ राइट आंसर। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकेन इनवॉल्व्स दैश। आर आंसर कोटा हम लाइकेन ने जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सेटा आ भितर को कैरेक्टर आ भितर कोटा आंसर हम। ऑप्शन ए देछि बोथ आल्गाल एंड फंगाल पार्टनर्स माने इन्वॉल्व थे से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने, ना केवल फंगाल पार्टनर इन्वॉल्व थे ना आल्गाल पार्टनर ओनली प्रेजेंट थी से। आर आंसर हम फंगाल पार्टनर ओनली। मन रखिए ऑप्शन बी हूँ यार राइट आंसर, फंगाल पार्टनर ओनली। बुझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द सस्पेंसर ऑफ एन एम्ब्रियो? ठीक अच्छे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन फंक्शन ऑफ एन सस्पेंसर ऑफ एन एम्ब्रियो। आ भितर कोटा तार आंसर हम से देछि प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो और पुश द एम्ब्रियो डीप इनटू द एंडोस्पर्म। ऑप्शन सी देछि अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। ऑप्शन डी देछि डेवलप एडिशनल प्रो एम्ब्रियो। तार आंसर कौन हम? 4 नंबरटा पुश द एम्ब्रियो डीप इनटू द एंडोस्पर्म। ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर। ठीक अच्छे, सस्पेंसर ऑफ एन एम्ब्रियो रो एटा हूँ फंक्शन। से कौन करिवो ना पुश द एम्ब्रियो डीप इनटू द एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म भितर एम्ब्रियो को डीपली से पुश करिवो। ठीक अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन aquatic ecosystem the highest population of organism belongs to dash। आमर जो इकोसिस्टम अच्छी aquatic इकोसिस्टम जमती कि पॉन्ड इकोसिस्टम से को प्रकार ऑर्गेनिज्म कर अधिक पॉपुलेशन देखा जाए। ऑप्शन ए देछि फाइटोप्लांक्टन, ऑप्शन बी देछि aquatic weeds, ऑप्शन सी देछि स्मॉल फिश, ऑप्शन डी देछि जू प्लांक्टन। आ भितर कोटा हम कहार अधिक देखा जाए संख्या ना ऑप्शन ए हम राइट आंसर फाइटोप्लांक्टन। ठीक अच्छे, aquatic इकोसिस्टम रे अधिक पॉपुलेशन कहार थाए ना फाइटोप्लांक्टन मानकर थाए। क्वेश्चन नंबर 6। इन ए प्लांट सेल द नॉन सेलुलोसिक पॉलीसैकेराइड्स पेक्टिन लिग्निन्स एंड फेनोलिक सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन डैश। ए सब सब्सटेंस गुड़ा प्लांट रो कोठी प्रेजेंट थाए। ठीक अच्छे, ऑप्शन ए देछि प्राइमरी सेल वाल, ऑप्शन बी देछि मिडिल लामेला, ऑप्शन सी देछि इंटरवाल स्पेस, ऑप्शन डी देछि द एंटायर सेल वाल। 6 नंबर आंसर हम द मिडिल लामेला। ऑप्शन बी हूँ राइट आंसर द मिडिल लामेला। ठीक अच्छे, 6 नंबर हूँ ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑरिजिन एंड सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट
क्वेश्चन बुझंतु से कोची द प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन एंड सेकेंडरी सेंटर ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स वेर प्रपोज्ड बाय एटा किए प्रपोज करथिले आर साइंटिस्ट को ना देछि आर आंसर हबो NAI भैबिलोव ऑप्शन ए होची राइट आंसर 7 नंबर आंसर होची ऑप्शन ए बुझला क्वेश्चन नंबर 8 the effects of ethylene can be inhibited by increasing the dash ethylene रो इफेक्ट टाकू इनहिबिट माने कमई परिबो केमिति कोटा इंक्रीज कले एथिलीन रो इफेक्ट टा कमी जिवो आ भितर कोटा हबो ऑप्शन ए देछि लाइट इंटेंसिटी ऑप्शन बी देछि कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ऑप्शन सी देछि वाटर स्ट्रेस ऑप्शन डी देछि न्यूट्रिएंट सप्लाई 8 नंबर आंसर हबो वाटर स्ट्रेस मन रखिबे ऑप्शन सी होची राइट आंसर एथिलीन रो इफेक्ट को इनहिबिट करिया पई ठीक अछि इनहिबिट करिया पई हमरो वाटर स्ट्रेस टा इंक्रीज होवा दरकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्रॉसिंग ओवर इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स इज रेस्पोंसिबल फॉर डैश डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम क्षेत्र रे क्रॉसिंग ओवर टा रेस्पोंसिबल होता है कौन पाई ऑप्शन ए देछि डोमिनेंस ऑफ जीन्स बी देछि अपीयरेंस ऑफ पेरेंटल टाइप्स इन नेक्स्ट जनरेशन ऑप्शन सी देछि सेग्रीगेशन ऑफ एलेलीज ऑप्शन डी देछि रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड एलेली आ भितर कोडा हबो 9 नंबर आंसर हबो रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड एलेली ठीक अछि नेक्स्ट two bacteria found to be very useful in genetic engineering experiments are dash को दीटा बैक्टीरिया यूज होती जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट को दीटा बैक्टीरिया अदर आंसर हम ऑप्शन बी ईस्चेरेरिया एंड एग्रोबैक्टीरियम ठीक अच्छे ईस्चेरेरिया एंड एग्रोबैक्टीरियम 10 नंबर आंसर होची ऑप्शन बी Next, the sexual reproduction is of isogamous type in some species of the genus dash. को species रो genus रे sexual reproduction टा isogamous होता है तो 1 नंबर आंसर होची क्लामाइडोमोनास ठीक अछि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ आइसोगैमस टाइप इन सम स्पेसीज ऑफ जीनस को जीनस पाखे देखा जाय थाए ना क्लामाइडोमोनास पाखे देखा जाय नेक्स्ट होची एम्फिथेसियल ओरिजिन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज सीन इन सैप्रोफाइट ऑफ क्या पाखे देखा जाए एम्फिथेसियल ओरिजिन ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू जो ओरिजिन टा देखा जाए सैप्रोफाइट मान पाखे आ भितर क्या पाखे से देखा जाए रिक्सिया मार्कांसिया पेलिया फ्यूनारिया आ भितर कोटा हम आंसर 12 नंबर एटा तो 12 नंबर आंसर कन्फ्यूज अच्छी तो आपण मैंने कमेंट निहाती भावे ठीक आंसर कोटा कहे एटा आंथोसेरस बार राइट आंसर किंतु एथिरे तो नहीं तो आपण माने कमेंट करी कहबे यार राइट आंसर कोन ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन द कॉर्टेक्स ऑफ डाइकोट स्टेम इज डिराइव फ्रॉम डैश डाइकोट स्टेम रो जो कॉर्टेक्स टा सेटा कोठु डिराइव होता है 13 नंबर रो आंसर होची पेरिब्लेम ठीक अछि पेरिब्लेम होची ऑप्शन बी सेटा होची राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन a taxonomic key that is prepared dichotomously taking one or more characters dichotomy is called a dash ताको कौन कहा जाए taxonomy सिंगल across key एटा को सिंगल across key सॉरी सिंगल एक्सेस की कहा जाए 1 नंबर सॉरी एटा हबो राइट आंसर नेक्स्ट in a distribution with a mean and standard deviation of 40 and 2 respectively
the coefficient of variation will be coefficient of variation केते हबो ना एटा हबो ऑप्शन ए 5% ठीक अछि एटार आंसर हबो 15 नंबर आंसर हबो ऑप्शन ए नेक्स्ट इन ग्राउंड नट सीड्स the food is reserved as protein and oil droplet in the dash जो ग्राउंड नट रे फूड टा रिजर्व होकर रहता है सेटा कोडी रहता है एंडोस्पर्म रे सीड कोट रे कटिलिडन रे और एम्ब्रियोनल एक्सिस रे 16 नंबर रो आंसर हबो कटिलिडन्स ऑप्शन सी होची राइट आंसर ठीक अछि Next question, the activation of a fatty acid through ATP dependent conversion to fatty acyl coenzyme is catalyzed by dash coenzyme द्वारा एटा catalyze होता है से कहूची activation of fatty acid through ATP dependent conversion fatty acid टा activate हबो to fatty acyl coenzyme साको किए करिवो conversion किए करिवो कोइन कहा साहाय्य रे होता है 7 नंबर रो राइट आंसर होची थायोकाइनेज ऑप्शन सी होची राइट आंसर नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लास ऑफ सिंपल प्रोटीन आद्रो को क्लास टा होची प्रोटीन रो सिंपल प्रोटीन क्लास रे एटा बिलोंग करता है सेटा होची हमरो स्क्लेरोप्रोटीन ऑप्शन बी एटा होची सिंपल प्रोटीन वन ऑफ द सिंपल प्रोटीन स्क्लेरोप्रोटीन नखिबे नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following is a strong mutagen आ भितरु सबठारु strong mutagen काम कोन म्यूटेशन करिवारे हेल्प करता है ठीक अछि तो सेटा होची आ भितरु strong mutagen कोटा 19 नंबर इधरे ऑप्शन डी होची राइट आंसर कार्बन टेट्रासल्फाइड होची गोटे strong mutagen ठीक अछि नेक्स्ट कोड नंबर क्वेश्चन which of the following statement is true not true about the DNA replication process DNA replication जो प्रोसेस अच्छी कौन DNA तार कॉपी तैयारी करता है ता भितरु ए सब स्टेटमेंट भितरु कोटा ट्रू नुह कोटे नंबर ठीक अच्छे तो DNA polymerase synthesize primer in eukaryote DNA G synthesis primer in prokaryotes loading and activation of helicase in J1 phase the new DNA is synthesized semi conservatively ये तो ठीक अच्छी तो ये ऑप्शन सी होची राइट आंसर एटा होची नॉट ट्रू ठीक अछि आउ सब स्टेटमेंट ठीक अछि तो कोडे नंबर आंसर हबो ऑप्शन सी नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय राइजोपस द्वारा कोटा हेई न थाए स्पॉइलेज ऑफ फूड और डिटोरिएशन ऑफ आर्टिकल्स डिग्रेडेशन ऑफ लिटर्स प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स कोटा से करी न थाए और आंसर हबो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स तो राइजोपसटा एंटीबॉडी प्रोडक्शन करी न थाए बाकी काम करथाए नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकिल ऑफ मार्कांसिया रिडक्शन डिवीजन टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ डैश जेते बेले मार्कांसिया रे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेई थाए सेते बेले रिडक्शन डिवीजन जो हेई थाए सेटा को टाइम रे गैमेटोजेनेसिस बेले हेई थाए ना आंथेरियल आर्किगोनियल डेवलपमेंट बेले होता है ना स्पोरोजेनेसिस बेले होता है ना स्पोर जर्मिनेशन बेले होता है 22 नंबर रो राइट आंसर होची 22 नंबर रो राइट आंसर होची स्पोरोजेनेसिस ऑप्शन सी होची राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर आंसर है स्पोरोजेनेसिस ऑप्शन सी होची राइट आंसर नेक्स्ट 23 टू नेबरिंग ट्रैकिट्स एंड वेसल्स एक्सचेंज सैप फ्लो थ्रो डैश 23 नंबर आंसर होची ऑप्शन नंबर से देची फास्ट देची ऑप्शन ए देची परफोरेटेड एंड वाल्स इंटरसेलुलर स्पेस पैरेन्काइमा आउ एटा डी पीट सब एटा राइट आंसर 23 नंबर रो नेक्स्ट व्हेन मोर देन वन स्पेसिमेन और इलस्ट्रेशन आर साइटेड बाय एन ऑथर एज द नोमेनक्लेचरल टाइप विदाउट डेजिग्नेशन ऑफ ए होलोटाइप सच डेजिग्नेटेड टाइप्स आर कॉल्ड ताको कोन कहबे आइसोटाइप एपिटाइप सिनटाइप और इलेक्ट्रोटाइप 24 नंबर रो राइट आंसर होची सिन टाइप मन रखिबे ऑप्शन सी होची राइट आंसर सिन टाइप ठीक अछि
आउ थे कही रखुच्छी जदि आपण मैंने टेस्ट सीरीज नाक चाहूँगी ताले आम नंबर रे निहाती भाव कंटाक्ट करेंगे आउ यूनिवर्सिटी लेवल प्रिपेरेसन आपण मानक हेल्प मिल पार ठीक अच्छे आदि आपण मैंने इच्छुक अच्छा ताले डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छी निहाती भाव हमको कंटाक्ट करूँ नंबर टी हूँ 7978405181 ठीक अच्छे नेक्स्ट 25 देखा 25 क्वेश्चन इन ए सैंपल विथ 25 replicates and a standard error of 0.16 the variance of the sample will be sample केते हबो variation and our answer मु कहि दोची 25 रो राइट आंसर हबो 2.56 ठीक अछि 2.56 is the right answer. Next question 26 which of the following characters is not useful for identification of an individual chromosome आ भितर को कैरेक्टर टा यूज हेई न थाए इंडिविजुअल रो क्रोमोसोम रो आइडेंटिफिकेशन पाई 26 रो राइट आंसर होची ऑप्शन ए देछि लेंथ ऑफ क्रोमोसोम आर्म रेशियो पोजीशन ऑफ द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ऑप्शन डी देछि माइटोटिक इंडेक्स एटा होची राइट आंसर एटा गोटे कैरेक्टर नो इंडिविजुअल रो क्रोमोसोम आइडेंटिफिकेशन पाई तो ऑप्शन डी होची राइट आंसर. Next 27 the amino acids that is coded by a single codon is dash एमिति को अमीनो एसिड अच्छी जे कि गोटे सिंगल कोडन द्वारा कोड होता है मिथ्योनाइन और फिनाइल अलानिन टाइरोसिन आस्पाराजिन आ भितर आंसर कोटा ठीक अच्छी मिथ्योनाइन होची गोटे अमीनो एसिड जे कि केवल गोटे सिंगल कोडन द्वारा कोड होता है मन रखिए मिथ्योनाइन राइट आंसर. Next question which of the following is not required during beta oxidation of fatty acid beta oxidation of fatty acid बेले आ भितर कोटा दरकार हेई न थाए 28 तो आर आंसर हबो FADH2 NADH plus H plus ए दीटा मत लगुच दीटा हम बोधे तो राइट आंसर मत कमेंट निहाती भाव कहे आर राइट आंसर कौटा हम FADH2 और NADH plus H plus ठीक अच्छे मत कमेंट निहाती भाव जनइबे. नेक्स्ट 29 देखा व्हेन क्रोमोसोमल एबेरेशन occurs is both the homologous it is classified as dash क्रोमोसोमल एबेरेशन जितले होता है is both the homologous it is classified as homosomal or homobranchial heterosomal or allosomal और आंसर कोठा हबो 29 नो राइट आंसर कह दोची ऑप्शन डी allosomal ठीक अछि. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 presence of an internal ribosome entry site in eukaryotic mRNA तार कोड़ा हवा भितर से कम कौन कर जो प्रेजेंट था इंटरनल राइबोसोमल एंट्री साइट प्रेजेंट था यूकैरियोटिक एमआरएनए से कौन हेल्प करे ऑप्शन ए देछि स्टॉप ट्रांसलेशन बी देछि प्रोमोट इट्स ट्रांसलेशन अंडर एडवर्स कंडीशन बाय रिक्रूटिंग न्यू राइबोसोम्स ऑप्शन सी देछि स्टिमुलेट आरएनए एडिटिंग ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड एमआरएनए ऑप्शन डी देछि ब्लॉक द एंट्री ऑफ राइबोसोम when the translation process is on. 30 number right answer हबो promotes its translation under adverse condition by recruiting new ribosomes. 30 number right answer होची option number B. 31 the ascus develop from the tip of an ascogenous hyphae by क्रोजियर फॉर्मेशन इन डैश एटा कोठी होता है को केस कहा पाखे देखा जाता है म्यूकोर और राइजोपस पेनिसिलियम और न्यूरोस्पोरा कहा पाखे एटा देखा जाता है न्यूरोस्पोरा मान केस रे लिखा है मन रखिए ठीक अच्छे. नेक्स्ट 32 द लीव्स ऑफ टेरिस इज डैश लीव्स ऑफ टेरिस जो अच्छी तर लीव्स गुड़ा तर कैरेक्टर कौन से सिंपल थांती ना स्केली और मेम्ब्रानस थांती ना पिनेटली कंपाउंड थांती ना फ्लेसी एंड सक्कलेंट थांती और आंसर कोड हबो एटा आंसर हबो ऑप्शन सी पिनेटली कंपाउंड ठीक अछि.
33. The adaptive anomalous secondary growth of stem is seen in dash. କାହା ପାଖରେ ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ? 33 ଏଇଟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ବାଇଗୋନିଆନ୍ ପାଖରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ବାଇଗୋନିଆ ପାଖରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ ଆନାନମସ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ୍ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ 34. The variance among the replicate of a sample is not required to be determined for estimation of. କାହାର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଷ୍ଟିମେସନ୍ ପାଇଁ ଏଇଟା ସାମ୍ପଲଟା ରିକ୍ୱାର ହେଇନଥାଏ। 34ର ଆନ୍ସର ହେଉଛି କୋଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭେରିଏସନ୍। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ 35. Which of the following provide the signal to the ribosome for the attachment of release factor? ठीक अच्छे से कौन which of the following provide the signal to the ribosome को signal पठाउथियो for the attachment of release factor रो attachment पाई। 35 रो right answer हबो the termination codon। option C termination codon होची ठीक आंसर right answer। option C होची right answer। Next 36 question. During photorespiration oxygen is consumed in। ଯେତେବେଳେ ଫଟୋ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ହେଇଥାଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ଟା କାହା ଦ୍ୱାରା କନଜ୍ୟୁମ୍ ହେଇଥାଏ? ସାଇଟୋସୋଲ୍। ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି ପେରୋକ୍ସିଜମ୍। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ। ଆର ଆନ୍ସର୍ ହେବ କେଉଁଟା ନା ଅପସନ୍ ବି କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, 36ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ 37. Which of the following pigment is not responsible for harvesting light for photosynthesis? photosynthesis ପାଇଁ light harvesting ପାଇଁ କୋଉ ପିଗମେଣ୍ଟଟା ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ହେଇ ନଥାଏ? 37 ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ସ। ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ଫାଇକୋବିଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ସ। ଅପସନ୍ ସି ଦେଇଛି କ୍ୟାରୋଟିନ୍ସ। ଅପସନ୍ ଡି ଦେଇଛି କ୍ରିପ୍ଟୋକ୍ରୋମ୍ସ। 37ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି କ୍ରିପ୍ଟୋକ୍ରୋମ୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। Next 38. The enzymes of TCA cycle are located in dash. TCA cycle ले जितक एंजाइम सब इन्वॉल्व होती से माने कोठी लोकेटेड होती? ऑप्शन ए देइछि साइटोप्लाज्म। ऑप्शन बी देइछि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ऑप्शन सी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ऑप्शन डी देइछि पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। 38 रो राइट आंसर होछि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ऑप्शन बी होछि राइट आंसर। Next 39. Which of the following methods of chemical transfectants is not used for transfection? Which of the following method of chemical transfectants is not used for transfection? Our answer हवा ऑप्शन ए देइछि कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन बी देइछि DEAE डेक्स्ट्रान। ऑप्शन सी देइछि कैटायन लिपिड्स। ऑप्शन डी देइछि पायरोफॉस्फेट। 39 रो राइट आंसर होची पायरोफॉस्फेट। ऑप्शन डी होची राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। Adelphos stamens, superior ovary and actinomorphic flower are the characteristics of family. एमाने को फैमिली जानती? 40 रो आंसर होची ऑप्शन ए देइछि फैबेसिया। ऑप्शन बी देइछि रोजेसिया। ऑप्शन सी पोआसिया। ऑप्शन डी देइछि मालभासिया। आर आंसर हम मालभासिया। ठीक अच्छे, ऑप्शन डी होची राइट आंसर। 40 रो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 41. Which of the following group of bacteria grow like branched fungal mycelia structure? को ग्रुप रो बैक्टीरिया रो को ग्रुपटा ब्रांच लाइक ग्रो करिथांती माइसेलिया स्ट्रक्चर रे? ऑप्शन देछि एक्टिनोमाइट्स कोकीज। ऑप्शन सी देछि स्पाइरुलम। ऑप्शन डी देछि बैसिली। 41 रो राइट आंसर होची एक्टिनोमाइसेट्स। ऑप्शन ए होची राइट आंसर। ये माने ही ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर रे ग्रो करथांती। नेक्स्ट 42. The sporangia in the sporophylls of Selaginella are dash। से माने कौन ताकर कैरेक्टरिस्टिक्स कौन? होमोस्पोरस
and saprophytic na heterosporous saprophytic na homosporous gametophytic na heterosporous gametophytic 42 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି heterosporous and saprophytic ଅପସନ୍ B ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ next 43 formation of the middle layer of the anther wall by the secondary parietal tissue is the characteristics of କାର characteristics 43 ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି डाइकट अर्चिड्स ग्रासेस कमेलाइन एटार आंसर होची ऑप्शन ए ठीक अछि ऑप्शन ए होची राइट आंसर डाइकट्स ठीक अछि एटा टिके मते कमेंट रे जणेबे यार राइट आंसर कोन 43 रो ठीक अछि 44 डाइकट हैव बीन सेग्रीगेटेड इनटू lignosia and herbaceae in the classification proposed by dash एटा के प्रपोज करथिले 44 रो राइट आंसर होची हचिनसन ठीक अछि ऑप्शन बी होची राइट आंसर 44 रो राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट 45 which of the following reaction step is an energy yielding step during glycolytic breakdown of glucose to pyruvate को रिएक्शन टा एनर्जी यील्डिंग स्टेप जितेबाला ग्लाइकोलाइटिक ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोजटा पायरुवेट को कन्वर्ट होता है सेतेबेले एनर्जीटा को स्टेप रे यील्ड होता है ऑप्शन ए देछि 1,3 बाई 20 फॉस्फोग्लिसरेट टू 3 फॉस्फोग्लिसरेट और 3 फॉस्फोग्लिसरेट टू 2 फॉस्फोग्लिसरेट ऑप्शन सी देछि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट ऑप्शन डी देछि 2 फॉस्फोग्लिसरेट टू एनोल पायरुवेट 45 रो राइट आंसर होची 1,3 20 फॉस्फोग्लिसरेट टू 3 फॉस्फोग्लिसरेट ऑप्शन ए होची राइट आंसर नेक्स्ट 46 a sense stand with sequence AAT GCG ATG GCT will code for a mRNA with codons dash एही कोडन टा हमरो काहा को mRNA रे काहा को कोड करिवो 46 का कोड करिवो AAU GCG AUG GCU तो ऑप्शन ए देछि UUA CGG 46 रो राइट आंसर हबो ऑप्शन बी ठीक अछि नेक्स्ट 47 in C3 cycle the energy utilization for conversion of one carbon dioxide molecule to organic carbon is dash for 47 2 ATP and 1 NADPH or B देछि 18 ATP and 12 NADPH ऑप्शन सी देछि 3 ATP and 2 NADPH ऑप्शन डी देछि 2 ATP and 2 NADPH 47 नो राइट आंसर होछि 3 ATP and 2 NADPH next 48 the types of genotypes in offspring by selfing of parent with allelic constitution AA capital A small a capital B small b capital C sorry small c capital D small d capital EE will be ताले कौन हबो आर आंसर 48 रो आंसर कहि दोछि ऑप्शन डी हबो राइट आंसर नेक्स्ट 49 the pneumococcus experiment proved that pneumococcus experiment जोड़ा हेतला सेटा प्रूफ कौन करथिला ना DNA is the genetic material RNAs are involved in DNA replication protein are contagious option D pneumococci do not reduce sexually 49 रो राइट आंसर होची DNA is the genetic material एटा pneumococcus बैक्टीरिया रे एक्सपेरिमेंट रे प्रूव हेतला नेक्स्ट 50 A bacterial chromosome contain 100 kbp DNA and 6 restriction sites. By restriction digestion and gel electrophoresis, the fragment will be 24 kbp, 22 kbp,
21 kbp and 17 kbp 11 kbp and dash 50 नंबर रो राइट आंसर हम मन रखु 5 kbp ठीक अच्छे तो राइट आंसर हम 5 kbp। नेक्स्ट क्वेश्चन माइकोप्लाज्मा डिफर्स फ्रॉम बैक्टीरिया इज नॉट पोजेसिंग द डैश माइकोप्लाज्मा डिफरेंट होती क्या सहित ना बैक्टीरिया ठारू तांको पाखरे कौन न थाए से जो से बैक्टीरिया सहित इक्वल हो जाती सॉरी डिफर हो जाती ऑप्शन ए दी सेल वॉल ऑप्शन बी देछि फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑप्शन डी देछि डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल ऑप्शन डी देछि पेनिसिलिन रेजिस्टेंस 51 नो राइट आंसर होछि सेल वॉल ऑप्शन ए होछि राइट आंसर। नेक्स्ट 52 द हेलिकल सिमेट्री ऑफ कैप्सिड्स इज सीन इन डैश हेमिकल सिमेट्री कैप्सिड रो हेमिकल सिमेट्री कहाँ पाखे देखा जाए T2 फेज पाखे ना पोलियो भाइरस ना रेट्रोवायरस ना TMV भाइरस क्या पाखे देखा जाए 52 रो राइट आंसर होची TMV टोबाको मोजाइक भाइरस पाखे देखा जाए कैप्सिड TMV भाइरस पाखे ही प्रेजेंट थाए। 53 which of the following statement is not correct for cycas cycas पाई कोटा correct नुह the zygote form the free nuclear pro-embryo option B देछि the endosperm contain the female gametophytic cells option C देछि the suspensor possess the pro-embryo deep into the endosperm option D देछि embryo differentiates several cotyledons 53 रो राइट आंसर होछि embryo differentiate several cotyledons 53 रो राइट आंसर होछि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 54 formation of wing pollen grain is the characteristics feature of dash wing pollen grain कहाँ पाखे फॉर्मेशन होता है कहाँ से characteristics feature होता है 54 और आंसर होछि पाइनस पाइनस पाखे wing pollen grain देखा जाता है फॉर्मेशन होता है। Next 55 a 16 nucleated embryo sac with 3 celled egg apparatus and 11 antipodes is of dash को टाइप रो सेल एटा 16 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक जो थरे कि 3टा सेल्ड एग apparatus हेतिबो आउ 11 टा एंटीपोड्स थिबो ताल ताकू को टाइप रो सेल कहबा हमें 55 55 रो राइट आंसर और आंसर हो ऑप्शन बी ड्रॉसा टाइप ठीक अछि ड्रॉसा टाइप। नेक्स्ट 56 the outermost layer of endosperm of maize grain is called maize grain रो जो outermost layer थाए endosperm रे ताको कौन कहा जाए tapetum periplasm epidermis और aleron आ भितर कोडा 56 ताको aleron कहा जाए ऑप्शन डी मन रखिए outermost layer of endosperm of maize grain मक्का रे तरा endosperm कहा जाए aleron। 57 sorry the study of the ecological behavior of a group of species in an ecosystem ecological behavior जदि आम स्टडी करवा गोटे स्पेसीस गोटे इकोसिस्टम रे ताहले आम ताको कौन कहबा को स्टडी कहबा ना सिनेकोलॉजी मन रखिए सिनेकोलॉजी कहा जाए ऑप्शन बी होची राइट आंसर। नेक्स्ट 58 which of the following is a negative interaction between population भितरे जदि नेगेटिव इंटरेक्शन होता है ताको आम कौन कहबा 58 रो राइट आंसर होची ऑप्शन ए कंपटीशन नेगेटिव इंटरेक्शन होची माने कोन उभय जो भी स्पेसीज से इन्वॉल्व थे से कौन करेंगे निजे निजे कम्पीट करेंगे। नेक्स्ट 59 द अल्ब्यूगो इन्फेक्शन कॉजेस डैश अल्ब्यूगो इन्फेक्शन टा कौन कॉज करता है रस्ट इन व्हीट लीव्स रस्ट इन राइस स्टेम व्हाइट रस्ट इन क्रूसीफर्स लीफ स्पॉट इन ग्राउंड नट आर आंसर हम 59 नो राइट आंसर होची व्हाइट रस्ट इन क्रूसीफर्स। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन which of the following is not a functional group in biomolecule biomolecule ले भितर कोटा functional group नुह आर आंसर होची ऑप्शन नंबर बी
C double bond answer habo option D C double bond C. Next 61, during active transport in plant cell the ion are transported across the membrane by dash. ଯେତେବେଳେ active transport ହେଇଥାଏ plant cell ରେ ion ଗୁଡ଼ା cell membrane ଦେଇକି କେମିତି transport ହେଇଥାନ୍ତି 61 ର right answer ହେଉଛି ऑप्शन ए ଦେଇଛି concentration gradient, ऑप्शन बी ଦେଇଛି electrochemical gradient, ऑप्शन सी ଦେଇଛି the function of the carrier, ऑप्शन डी ଦେଇଛି diffuse और आंसर of ऑप्शन सी the function of the carriers. Next 62, the rate of absorption of water is slow at a temperature near the freezing point because कौन पे एटा होता है temperature low slow होता है cell membrane become more viscous, ऑप्शन बी होची water around root zone freezes, ऑप्शन सी देची ट्रांसपिरेशन इज रिटार्डेड, ऑप्शन डी देची सॉइल न्यूट्रिएंट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस. राइट आंसर हम 62 सेल मेम्ब्रेन बिकम मोर विस्कस से जो टेम्परेचरटा वाटर एब्जॉर्प्शन जो टेम्परेचरटा स्लो हो ठीक अच्छे. नेक्स्ट 63, ए सेल वाल मेजर एज 600 म्यूमीटर इन डायमीटर under microscope with 40x objective and 10x eyepiece. The actual diameter of the cell was 63 रो right answer होची 1.5 millimeter. Next 64, the molar mass of macromolecule can be determined by डैश मोलार मासटा केमती कौन मैक्रोमोलेक्यूल मोलार मासटा केमती डिटरमाइन होता है और आंसर होची 64 रो STS PHE ठीक अच्छे ऑप्शन सी होची राइट आंसर. नेक्स्ट 65, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट RNA विषय को स्टेटमेंट भितर ट्रू है. ऑप्शन ए देची mRNA is the most unstable form, mRNA is the largest among RNA, tRNA is the largest among RNA, rRNA undergoes dynamic changes. 65 रो right answer होची mRNA is the largest among RNAs, option B. Next 66, the prerequisites for technological production of transgenics does not include dash. ता भितर कोटा इंक्लूड करी न थाए. 66, identification of the target gene, isolation of the target gene, integration of the gene to the vector, artificial production of the gene. 66 option D होची right answer. Next 67, nucleic acid labeling and identification can be done by the following except द्वारा ही न थाए और आंसर हम ऑप्शन डी राइबोस सुगर. नेक्स्ट 68, Pribnow box is the -10 box in the bacterial promoter region having the consequent sequence. 10 box region जो देखा जाता है जो प्रोकैरियोटिक सेल है प्रोकैरियोटिक DNA देखा जाता है तो सही consequent sequence टा तारा कौन से चिन्हिबा केमती आमे ना ताकू कहा जाए अनदरली 68 को टाटा बॉक्स बोली कहा जाए. तो टाटा TA जोठी आसीबो सेठी -10 बॉक्स बोली सेटा को आमे चिन्हिबा. तो ऑप्शन ए होची राइट आंसर. नेक्स्ट 69, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए गैसियस बायोमोलिक्यूल बायोजियोकेमिकल साइकिल. गैसियस बायोजियोकेमिकल साइकिल अंडर किए जाता है नाइट्रोजन सल्फर पोटासियम और फॉस्फोरस और आंसर हम नाइट्रोजन. ऑप्शन ए होची राइट आंसर. लास्ट क्वेश्चन, द ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू डिफरेंट कम्युनिटीज इज कॉल्ड डैश. दुईटा डिफरेंट कम्युनिटी भितर ट्रांजिशन जोन जोटा ताको कौन कहा जाए मन रखिए और आंसर होची इकोटोन. ऑप्शन बी होची राइट आंसर. ठीक अच्छे. जदि भिडियोटी भल लगे ताहले लाइक और शेयर करने को जमा भूलें. जदि टेस्ट सीरीज चाहूँगी तो आमको निहाती भाव कंटाक्ट करेंगे आपण को बेस्ट प्रिपेरेसन मिल पार. ठीक अच्छे. तो नमस्कार, जय जगन्नाथ.